Good morning, Jai Sri Swaminarayan. Today we learn the international place value chart. You are already learned that international place value chart to ones, thousands and millions. Now we learn the extension, further extension of numbers, international systems of ones, thousands, millions and next billions. Okay, you know that ones, thousands, millions and billions is called periods, and you know that ones periods, ones, tens and hundreds plus ones, tens and hundred plus thousands periods. You already learned that thousands, 10,000s and hundreds, thousands plus thousand, 10,000 and 100,000 plus millions periods. Okay, you learn that millions, 10 billions and 100 millions, it is plus millions, 10 millions and 100 millions. It is places. And now new we are learn billions, that means places आएगा billions, 10 millions and 100 billions. Billions, 10 billions and 100 billions. Okay, now we put the digit. First one, ones digit. Okay, ones digit, that means ones. Okay, that means one digit. Tens, tens, that means two digits, 10. Hundreds, that means 100 digits, 3 digit, hundreds. Thousands, 4 digit, thousands. 10,000s, 5 digit, thousands. 100,000s, 6 digit, millions, 7 digit, million, 10 millions, 8 digit, okay, 100 million, 9 digit, next a billion, 10 digit, billion, 11 digit, and last one, hundreds billion, 12 digit. Okay, it is called international place value chart. Okay, now we next comparison of Indian and international system of numeration, and it is called ones, tens, 100, 1000, 10,000, 100,000, million, 10 billion, 100 million, billion, 10 billion and 100 billion. It is called
places. Okay, now we comparison international and Indian system. First you know that 1 lakh is equal to 100,000. 1 lakh is equal to 100,000. 10 lakh is equal to 10 lakh is equal to 1 million. Next 1 crore. 1 crore is equal to 10 million. You know that it is lakh, crore it is Indian system, and million, billion it is international system. Now 1 crore is equal to 10 million. 10 crore is equal to 100 million. And last one, 100 crore is equal to 1 billion. That means इंडियन सिस्टम में जब 1 लाख होगा तब इंटरनेशनल सिस्टम में 100,000 होगा. इंडियन सिस्टम में 10 लाख होगा तब इंटरनेशनल सिस्टम में 1 मिलियन होगा. इंडियन सिस्टम में 1 करोड़ होगा तब इंटरनेशनल सिस्टम में 10 मिलियन होगा. इंडियन सिस्टम में 10 करोड़ होगा तब इंटरनेशनल सिस्टम में 100 मिलियन होगा. इंडियन सिस्टम में 100 करोड़ होगा तब इंटरनेशनल सिस्टम में 1 बिलियन होगा. ठीक है, इट इज द कंपैरिजन ऑफ इंडियन एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट. नाउ वी लर्न द नेक्स्ट एंड फर्स्ट एग्जांपल. राइट द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू of digit 1 and 4 in the international number. Let's see. First the number is 20, 1 billion 67, 7, 3, 4, 5, 7, 6, 0, 2. ये आपको नंबर है वो दिया गया है. नाउ फर्स्ट वी mark the commas to show the periods. You already learned that international place value chart. That means ones, thousands, millions and billions. Okay, it is the international chart. First we write down this digit. Last one 602. It is hundreds place, ones place. 5, 4, 5, 7. Thousands, 10,000s and 100,000. It is second periods. So 457. It is 1000 periods. Now millions, 10 millions and 100 millions. That means 773. It is millions. And last one 216. That means billions में आएगा. Billions, 10 millions and 100 millions. Billions, it is billions. That means 2,106 billions, 773 millions, 457,602 ones. ठीक है, it is the international chart. Now we put comma. You know that with it one's period is 1
period completed 1, 2, 3, put comma. 1000 period 7, 5, 4. That means thousands, 10,000s and 100,000s. That means second period is completed. We put comma. Millions, millions, 10 millions, 100 millions. That means millions period is completed. We put comma. And last one billions, billion, 10 billion and 100 millions. Okay. It is the international place value chart. Okay. Now we write the international place value of digit 1 and 4 in the numeral. That means 1 है वो कौन से प्लेस पे है तो वो लिखना है और उसका डिजिट है वो लिखना है. प्लेस वैल्यू ऑफ 1 प्लेस वैल्यू ऑफ 1 है वो 10 बिलियन में आएगा. 216 दैट मीन बिलियन, 10 बिलियन एंड 100 बिलियन. तो 1 है वो 10 बिलियन में आएगा. प्लेस वैल्यू ऑफ 1 10 billion. Okay, write down 1. You know that 1 है इसके पीछे जितने भी डिजिट है इसकी जगह पे इतने जीरो है वो लिख देंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, तो write down 10 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, we put comma correctly. 1, 2, 3, put comma. 1, 2, 3, put comma. 1, 2, 3, put comma. Okay, it is the place value of 1. Now the next 4. The number is 4. 4 है. That means 1000 periods है. Place value of 4. Ones, tens, 100, thousands, 10,000s, 100,000s. ठीक है. The place value of 4 100, thousands, 4. You know that 1, 2, 3, 4, 5. Write down 0. 1, 2, 3, 4, 5. We put comma correctly. 1, 2, 3. Put comma 1, 2, 3. Okay, it is the place value of 1 and place value of 4. Okay, understand students? Now we learn the next example. Write the number name in the international system. That means आपको नंबर दिया गया है उसको आपको वर्ड्स में लिखना है इंटरनेशनल सिस्टम में. Second one, the number is 67 billion 845 million 239,162. Okay, now we make the commas to show the periods. You know that the places is ones, thousands, millions and billions. Okay, ones, tens and hundreds. That means 162 ones, 239 thousands, 845 million and last one 67 billion. Okay, now we put comma correctly. 1, 2, 3, put comma. 1, 2, 3, put comma. 1, 2, 3, put comma. Okay, understand? Now we write the words. Means कि आपको words में लिखना है. Let's see. 67 billion 845 million
845,000,000 239,000 239,000 and 162 162. ओके, इट इज़ द इंटरनेशनल वर्ड्स। ये आपको पहले आप इस तरह से लिख दोगे, वंस, थाउजेंड, मिलियंस एंड बिलियंस, ठीक है। राइट डाउन, पुट कोमा करेक्टली, नेक्स्ट यू राइट द इंटरनेशनल वर्ड्स। अब इस तरह से देख के लिखोगे तो इजी रहेगा लिखने में। ओके, अंडरस्टैंड्स। नाउ वी लर्न द नेक्स्ट एक्सरसाइज, द एक्सरसाइज 1.4। Exercise 1.4. First exercise, first question. Mark the commas as to show the international periods. मीन्स कि आपको कोमा है वो सही जगह पे लिखना करना है। Question 1. Mark the commas to show the international periods. Yes, first one, 9, 6, 6, 5, 4, 5, 0, 2. First we write down the places, ones, thousands, millions and billions. Now we write down the digit. 502 is ones place, 654,000 place, and 96 million place. Okay, now we put comma, 1 2 3, put comma, 1 2 3, put comma, 1 2. ओके, ये आपके लिए इजी रहेगा, ठीक है। और एक बात याद रखो, वंस है तो वंस पीरियड में 3 प्लेसेस है, वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स। थाउजेंड्स में 3 प्लेसेस है, थाउजेंड्स, 10,000s एंड 100,000s। मिलियन में भी 3 प्लेसेस है, मिलियंस, 10 मिलियंस एंड 100 मिलियंस। बिलियंस में भी 3 प्लेसेस है, बिलियन, 10 बिलियंस एंड 100 बिलियंस। या फिर तो आप इस तरह से याद रखोगे तो आपको 3 डिजिट के बाद आपको कोमा है वो करना है राइट टू लेफ्ट में। 1 2 3 पुट कोमा, 1 2 3 पुट कोमा, 1 2। यहाँ पे हमें इतने डिजिट दिए गए तो यहाँ पे हमने स्टॉप कर दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, 4003 22334. Okay, let's see. 334 ones place, 322 thousand place, 400 billion. Okay, we put comma correctly, 1 2 3, put comma, 1 2 3, put comma, 1 2 3. Okay, understand? Now third one, 8543200321. Write down first one,
251 ones place 003 1000 place राइट से लेफ्ट लिखना है ओके फिर 432 million plus and 85 billions plus okay right put comma 1 2 3 put comma 1 2 3 put comma 1 2 3 put comma 1 and 2 okay understands now next question is write international place value of the digit 5 in each means कि आपको जो डिजिट दिए इसमें जो 5 डिजिट है वो कौन से प्लेस पे है वो आपको लिखना है ओके अंडरस्टैंड नाउ क्वेश्चन 2 write international place value of the digit 5 in each. Let's see first one. $56,342,340 okay let's see the digit is 5 digit है वो मिलियन प्लेस पे ones tens 100 ones place 2 4 3 1000 place okay 6 5 मिलियन प्लेस में ये टेंस वंस मिलियंस एंड टेंस मिलियन ओके तो 5 है वो 10 मिलियंस पे है तो राइट डाउन 10 मिलियंस ऑफ 5 प्लेस वैल्यू लिखनी है तो राइट डाउन 5000 तो ये आपका क्या आएगा अब पीछे जितने भी डिजिट है इतने हम जीरो लगा देंगे 1 2 3 4 5 6 7 तो राइट 70 1 2 3 4 5 6 7 okay now put comma correctly 1 2 3 put comma 1 2 3 put comma okay understand now second one seven six 5 3 2 1 0 8 6 मिलियन से ठीक है 765,321,086 okay now let's see this 5 one is millions place पे है okay this one is ones place this 3 digit is 1000 place and this 3 digit is million place okay or this 5 one is millions place okay so this is the 5 million okay write down let's see the after digit is 1 2 3 4 5 6 write down 60 5 1 2 3 4 5 6 now we put comma correctly 1 2 3 put comma 1 2 3 put comma now third one 9 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 okay let's see last 3 digit is ones period 1 2 3 this 3 digit is 1000 period next 4 3 2 is million periods 95 is billion periods
Okay, this 5 is billion periods. Okay, let's see 5 billion. Write down after 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. हम 9 0 लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay, let's put comma correctly 1 2 3 put comma 1 2 3 put comma 1 2 3. Okay, understand? This is the question 2. Write international place value of digit in 5. Next question 3. Write 2,746,476,764 in expanded form. जो है आप expanded form already learned है. Write question 3. 2,746,476,764 in expanded form. Let's see. You know that expanded form, that means 2 billion. Write down 2 billion. Let's first digit is 2. आफ्टर जितने डिजिट है इतने हम 0 लगा देंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. First you put comma correctly. 1 2 3 put comma 1 2 3 put comma 1 2 3 put comma. Plus next 707 million. Let's see 7 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 1 2 3 4 5 6 7 8. You already know that बिलियन मिलियन ये वो डिसेंडिंग ऑर्डर में जाती है. यहाँ पे 9 0 है तो अब नेक्स्ट है वो 1 0 आएगा, फिर 7 6 5 4 3 2 और लास्ट में एक भी 0 नहीं आएगा. ठीक है, इस तरह से हम लिखते जाना है. वी पुट कोमा 1 2 3 पुट कोमा 1 2 3 पुट कोमा 1 2 3. नेक्स्ट डिजिट इज 4 tens million. Write 4. Yes, 8 7. Now 6 digit 1 2 3 4 5 6 7. Sorry, 9 8 7. 1 2 3 4 5 6 7. Okay, we put comma correctly. 1 2 3 put comma 1 2 3 put comma. Let's next one digit is 6. Write 0 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. You put comma correctly. 1 2 3 put comma 1 2 3 put comma. Now next digit is 4. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 1 2 3 put comma. Next digit is 7. 76,000. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 put comma 1 2. Next digit is 6,000. Okay. Next one 764. Okay, it is the expanded form. Okay, understand? Any question you write in comment box. Right now you write the homework. Exercise 1.4
question number 1 to 5th. Write in notebook. Okay, thank you.